Hello everyone. Today I'm going to start a new subject which is nothing but is the science. Okay. In science, we'll deal with the physics, chemistry, and biology. Uh, okay. So today we are going to see the physics part. Okay. So those who are preparing for civil services examinations or state PSCs. Okay. Whether it is state PCS exam or whatever exam in the state PSCs you are giving. Okay, so whether it is UPPSC or UPPSC, MPPSC, or UKPSC, or you can say Bihar PSC, whatever it is. Okay, so this science is common in all, whether it is UPSC or state PSC. So accordingly, you can, whatever exam you are targeting, you can just use this video for that. Okay, so what will be new in this video? I will first complete the theory part and related to in this science, and after completing the topic, or you can say the chapter, I will complete the previous year questions. Okay, I mean all exams, like whether it is UPSC exam, whether it is state PSC exams. Okay, so if you are watching this, so no need to follow anything else for at least for the science. Okay, this will be enough for you. Okay, so today I'm going to start a first chapter, or you can say first topic, which is measurement, or you can say units. Okay, so in one lecture we'll complete the all theory part, and in two lecture we'll complete entire questions which has already asked in the different exams. Okay, so this is about myself. So let's see the theory part of this, measurements and units. Okay, so let's start. See, there is some note related to measurement and unit. Okay, unit of measurement is defined as the magnitude of a quantity defined and adopted by convention or by law, obviously. Okay, it is used as a standard for measurement of the same kind of quantity. ठीक है, ये यूज होता है जो भी क्वांटिटीज होती है उसको मेजर करने के लिए. ओके, जैसे लेंथ को हम लोग मीटर से मेज़र करते हैं, या फिर वेट को केजी से, किलोग्राम से या ग्राम से मेज़र करते हैं. ओके, टाइम को सेकंड से मेज़र करते हैं. सो दिस इज द थिंग विच दे आर ट्राइंग टू से दैट एनी अदर क्वांटिटी ऑफ दैट kind can be expressed as a multiple of the unit or measurement. Okay, to measure physical quantities, 4 statements are in application as follows. Okay, so we'll see these 4 applications in the next slide. See, so the first application is the CGS system. Okay, CGS को हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में बोलते हैं. देखिए, हम लोग अपने 11th 12th और 9th 10th में MKS यूनिट पढ़े होते हैं. ओके, दैट विल ऑल्सो विल सी हियर, बट इट जनरली, I mean, CGS unit is also there. So instead of measuring, most of time we measure length into meter, but it's not like always in meter, it can be in centimeter. Okay, so the first application is, or you can say the first system is the CGS system. Okay, it is a variant of the metric system based on centimeter. First on centimeter, which is unit of length, you know that. Gram, which is unit of mass. Second is the unit of time. Okay, second is FPS system, that is foot, pound सिस्टम. ठीक है, ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज़ें फॉलो होती हैं. ठीक है, इन इंडिया वी जनरली यूज़ MKS, बट FPS इज़ फॉलो इन द ब्रिटिश सिस्टम. ठीक है, ब्रिटेन में इट इज़ यूज्ड एज FPS सिस्टम. वो CGS या MKS यूनिट नहीं यूज़ करते हैं. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इट इज़ रिलेटेड टू मेजरिंग फुट, which is unit of length, pound, which is unit of mass, second, which is unit of time. Okay, here they have written some note. 1 pound is equal to the 453.59 ग्राम. ओके, देखिए, अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 पाउंड कितना होगा.
कितने ग्राम के बराबर होता है. सो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम हियर इट इज़ 453.59 grams. Okay. Next, MK system that we are talking about earlier. So it is meter kilogram second system. Okay, it relates the measuring, meter, unit of length, kilogram which is unit of mass, second which is unit of time. Okay, सबको पता है इसको, इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है. Fourth one is the SI system. Okay, it is international system of unit. We'll see what is written here. It is the modern form of metric system of measurement. ठीक है, modern time में इसको use करते हैं. It is most widely used system of measurement. Okay, it was adopted during the conference of International Weight and Measure held in Paris in France in 1960. ठीक है, इसको फ्रांस में 1960 में अडॉप्ट किया गया था. It has 7 fundamental or base units. Okay, so what are these 7 fundamental units or base units? Okay, so here it is written in this table. So you can see here, length is nothing but its SI unit is meter, which is denoted by m, small m. Mass, which is denoted by, which SI unit is kilogram, which is written in kg. Okay, time, second, small s. Temperature, Kelvin, capital K. Luminous intensity, it's candela, it is denoted by CD. Electric current, it is in ampere, denoted by A, capital A. Amount of substance, which is in mole. Okay, SI unit is mole and its abbreviation is mole. ठीक है, देखिए अगर आप अपना क्लास 9, 10th, 11th, 12th याद करोगे तो ये जितनी भी यूनिट्स यहाँ पे दी हुई है इसको हम लोग यूज़ करते हुए आए हैं. ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट इट्स SI system. Okay, so MK units is taken from this only. Okay, so this is actually adopted by all over world, which is the international system. Okay, even many books you will foreign author books also they have used this. Okay, you can find in KGF or you can say in CGS unit also, but most of book they follow this SI system. Okay, next, definition of units of SI system. अब देखिए जो SI system है उसमें जो units है उसको कैसे डिफाइन किया गया उसके बारे में बात हो रहा है. So first we'll see the meter. Meter, the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 second. ठीक है, it is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum c to be 299,792,458 meter per second. Okay, so this is nothing but is the definition of the meter. कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने का. Okay, if you want to remember you can remember, but कोई नहीं पूछने वाला है. Okay, ठीक है, बट ये वैल्यू आप थोड़ा बहुत लमसम याद रखिएगा, which is 299,792,458 meter per second. Now kilogram, what is definition of kilogram? The mass of platinum iridium prototype kept at a or you can say in Paris, generally at 4 degrees centigrade, the mass of 1 liter pure water in 1 kilogram. ठीक है, कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं, इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप आराम से पढ़ के इसको समझ सकते हो. ओके, इट्स क्या इसमें बताना है. According to a revised definition which came into force on 20th May 2019, the kilogram is now defined in terms of Planck constant. ठीक है, it is defined by taking the fixed numerical value of Planck constant h to be 6.62607015 into 10⁻34 kg meter square per second. Okay, so 1 kg is nothing but
देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है चीज़, इट इज़ h by 6.62607015 into 10 minus 34 meter square per second, I mean meter to the power minus 2 second. ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला, बट ओके इफ यू वांट टू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, नेक्स्ट what is second, what is definition of second? 1 second equal to the duration of 91926317770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the unperturbed ground state of कैल्शियम CS133 एटम. ठीक है, अब देखिए ये सब क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने का. अगर आपको इच्छा है आप याद करो, मुझे तो नहीं याद है. ठीक है, तो मैं याद भी नहीं करने वाला हूँ. सो यू इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर. ओके, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू. इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द cesium frequency to be 91926317770 hertz, which is equal to per second. Okay, since we are seeing the measurements and units, so that's why I'm giving these definitions, but actually it is not required. Okay, nobody is going to ask you. Now fourth one is the ampere. What is definition of ampere? Given two parallel rectilinear conductor of negligible circular cross section, position 1 meter apart in vacuum, 1 ampere is the current, electric current, which passes through both of them, makes them attract each other by the force of 2 into 10 minus 7 Newton per meter of length. Okay, so this is nothing but is the definition of ampere. Again I am telling, nobody is going to ask you. Okay, if you want to remember you can remember. According to revised definition, ठीक है, इसके बाद इसको रिवाइज भी किया गया था, which came into force on 20th May 2019. The ampere is defined by taking the fixed numerical value of elementary charge E to be 1.6 into 10 minus 19 ampere second. Thus 1 ampere is the electric current corresponding to the flow of 1 by 1.6 into 10 minus 19 elementary charges per second. Okay, so this is the revised definition, you can remember. Okay, now Kelvin, fifth one is the Kelvin. 1 degree Kelvin equals 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. ये हमें पता है. ठीक है, ये चीज़ अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को या साइंस बैकग्राउंड को के हो तो ये डेफिनेशन हम सब लोगों को पता होता है. ठीक है, आप इसको याद रखिए, बाकी चीज़ों को ज़रूरत नहीं है याद करने का. ओके, आपके पास और भी चीज़ें हैं याद करने के लिए. सो आई वुड सजेस्ट यू रिमेंबर दिस, रिमेनिंग 4 इज नॉट रिक्वायर्ड. According to the revised definition, which came into force on 20th May 2019, the Kelvin is defined by taking the fixed numerical value of Boltzmann constant K to be 1.3 into 1.3800649 into 10 to the minus 23 kg meter square second to the power minus 2 Kelvin to the power minus 1. Thus 1 Kelvin is 1.380649 by K into 10 to the minus 3 kg per meter kg meter square per second square. Okay, so this is nothing but is the revised definition of Kelvin. Okay, that means 1 Kelvin is equal to the change of thermodynamic temperature that results in the change of the thermal energy kT by 1.380649 into 10 minus 23 joule kg meter square per second. Okay, sixth one is the candela. The candela is the luminous intensity
is in a given direction of a source that emits non-chromatic radiation of frequency which is 540 into 10 minus 12 hertz and has a radiation intensity in that direction of 1 by 683 watt per SR. Okay, so this is the definition of candela. सेवेंथ वन इज़ द मोल. ओके, ये भी हमें हमारे स्कूल टाइम में हम लोग पढ़े होते हैं काफ़ी. सो वी कैन सी हियर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस composed of as many specified elementary units molecules per atom as there are atoms in 0.012 kg of carbon. Okay, so this is nothing but is the definition of it was the old definition. So revised definition, according to the revised definition which came into force on 20th May 2019, the mole is the amount of substance of a system that contains 6.02 into 10 to the power 23 specified elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro number Na when expressed in the unit per mole and is called the Avogadro number. ठीक है, देखिए ये सातों डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए. अगेन मैं बोल रहा हूँ, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, अगर आपको याद करना आप याद करिए, बट आई वुड सजेस्ट टू डोंट रिमेंबर दैट. आप मेन चीज़ों को याद रखो क्योंकि आपके पास और भी चीज़ें हैं याद करने के लिए. ठीक है, नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू डेफिनेशन. ठीक है, देयर इज विल सी क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. सो वी हैव टू अप्रोच अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, बट स्टिल इफ समवन वांट्स टू रिमेंबर, यू आप स्लाइड में दिया हुआ है, आप आराम से बैठ कर पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो. इट्स अप टू यू. ओके, derived units. These units of measurement are derived from 7 base unit specified by international SI units. ठीक है, अब जैसे जितने भी यूनिट्स होते हैं मोस्टली इन्हीं सातों को यूज़ करके डेराइव होता है. ठीक है, आप कुछ भी उठा लो, फोर्स उठा लो, वेलोसिटी उठा लो, एनीथिंग एनर्जी, एंट्रोपी हुआ, कुछ भी आप उठा लो. सो एवरीथिंग इज डेराइव फ्रॉम हियर ओनली. ओके, these are either dimensionless or can be expressed as the product of one or more of the base unit, possibly scaled by an appropriate power of okay, I mean exponent. You can say that like कई बार मीटर स्क्वायर होता है, kg per second होता है. ओके, तो उसी की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं. Some of the coherent derived units in SI units are given in a special name. Okay, so below the table list 22, यहाँ पे मैं कुछ table we will see that with special name together with the 7 base unit they form a core of the set of units, set of SI units. All these SI units are combination of some of these 29 units. ठीक है, अब हम लोग एक टेबल देखने वाले जिसमें अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं, जो दोज आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 7 यूनिट्स. ओके, सो सी. ओके, सो you can see here the table, the 22 SI derived units with special name and symbols. Okay, so here you can see derived quantities, special name of units. ठीक है, units expressed in terms of base unit. Okay, and unit expressed in terms of other units. ठीक है, तो कुछ units होते हैं वो other term में भी लिखे जाते हैं, that we'll see. Okay, so the first one is the plane angle. Its special name is radian and its unit is radian and it is also written as meter per meter. Okay, solid angle, it is steradian which is denoted by SR, which is nothing but meter square by meter square. Frequency, it is written in hertz, which is denoted by Hz and which unit is per second. Force, which is Newton. Okay, which is Newton, it is also known as kg meter per second square. Okay, pressure or stress, it is Pascal
So it is kg, which is done by PA, which is kg per meter per second square. Energy or work, which is nothing but is joule. Joule is also written as J, which is kg meter square per second. Okay? Joule is also written as Newton meter. Okay, so other term is Newton meter. Power or radiant flux, which is denoted by watt, and also by capital W, which unit is kg watt भी बोलते हैं और kg meter square per second cube also, and which is also written as joule per second. Okay, हमें पता है okay, एनर्जी को अगर हम joule per second बोलते हैं it converted into power. Fine. Next, electric charge, it is coulomb. So C, it is a capital C, which is A into S. A is ampere. Voltage or electric, so it is denoted by volt, which is V. You can see here kg meter square, okay, per S cube per second cube per ampere, and it is also denoted by watt per ampere. Potential difference का कुछ नहीं होता है. Capacitance, Faraday, you know that, okay, which is denoted by F, which unit is this, per kg per meter square, S to the power 4 A square, okay, and which is also written as C by V. Electric resistance, which is ohm, okay, so ohm is denoted by this symbol, so kg meter square per second cube per ampere square, okay, which is also denoted as volt per ampere. Okay, next, electric conductance, so it is denoted as Siemens, which is S per kg per meter square S cube ampere square. S, I mean obviously second, it is ampere per volt. Magnetic flux, Weber, WB kg meter square per second square per ampere, okay, it is volt second. Next, magnetic flux density, which is Tesla, denoted by T, kg per centimeter square per ampere, not centimeter, per second square ampere per ampere, okay, Weber per meter square. Inductance, it is Henry, okay, so it is denoted by H, kg meter square per second square per ampere square, Weber per ampere. Celsius temperature, so degree Celsius, degree centigrade, Kelvin, that you know that. Luminous flux, it's lumen, it's denoted by LM, so candela steradian, so candela steradian. Illuminance, okay, it is you can say lux or Alex, so candela steradian per meter square, so LM per meter square. Okay, अभी आपको पता चल गया होगा ना कैसे कैसे यहाँ पे दिया हो. तो activity refer to radio nuclide, okay, so it is Becquerel, okay, so which is BQ per second. So absorbed dose, or you can say karma, which is done by Gray, that is GY meter square per second square, and which is also written as joule per kg. Other form is joule per kg. Dose equivalent, it's Sievert, SV meter square per second square, which is also written as joule per kg. Catalytic activity, cattle, so it is cat, which is denoted by mole per second. Fine. So these would, I think, this 22 SI units, okay, international standard units. Now some derived units in the SI expressed in terms of base unit. ठीक है, कुछ
और भी हैं जो कि derive from SI units and which is written in base unit. So you can see here area meter square, volume meter cube, speed or velocity meter per second, acceleration meter per second square, wave number per meter, density mass density kg per meter cube, surface density kg per meter square, specific volume मीटर क्यूब पर केजी. ओके, ये डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है. करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर पर मीटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेटेड मोल पर मीटर क्यूब, मास कंसंट्रेशन केजी पर मीटर क्यूब, ल्यूमिनेंस कैंडेला पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये सब आप चीज़ें कहीं ना कहीं पे देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, और वॉट एवर क्लासेज यू हैव already studied these units, you have sometime or many times you have seen. Okay, next the other measurement of length unit, you see 1 millimeter is 10 to the power minus 3 meter, 1 centimeter 10 to the power minus 2 meter, 1 kilometer 1000 meter, 1 angstrom 10 to the minus 10 meter. You know that a unit of length is measured very small distance like wavelength, atomic and ionic radius or size of molecules, and spacing between the planes of the atom in crystal. ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं. सो वो माइनस में आ जाता है, जैसे नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रॉम होता है. ओके, सो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, नैनोमीटर, दैट से पहले मैंने आपको बताया था. और नैनोमीटर इज 1 billionth of meter equal to 10 to the power minus 9 meter. It is used to measure extremely small objects such as atomic structure or transistor found in modern CPUs. Okay, micron, ठीक है. इट इज़, ये सब देखिए आपको कहीं ना कहीं पे आपको ये सब चीज़ें पता है. मैं इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग वो चैप्टर ही कर रहे हैं, तो उसमें जो भी छोटे से छोटी चीज़ें दी रहेंगी दैट वी हैव टू स्टडी. ठीक है, अगर हमें पहले से पता तो अच्छी बात है, अगर इवन दो इफ़ यू डोंट नो वी कैन रिमेंबर फ्रॉम हियर. ओके, सो इट इज़ द प्रीवियस नेम ऑफ माइक्रोमीटर. ठीक है, माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी बोलता है. 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 to the minus 6 म्यू एम भी सब जगह कई जगह पे लिखा होता है. इट्स नथिंग बट इज माइक्रोन, या माइक्रोमीटर इज द सेम थिंग. ओके, it is represented by mu. It is used to measure cell size. Okay, next astronomical units. Astronomical unit is usually used to measure distance within our solar system. ठीक है, काफ़ी large distance को इसको measure करने के लिए use होता है. An astronomical unit AU is the average distance between the Earth and Sun. It is equal to approximately 150 million kilometer, or AU 1 AU is 1.496 into 10 to the minus 11 meter. ठीक है, so 1 AU is, ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में. 1 AU is 1.496 into 10 to the power 11 meter. It's nothing but it's the astronomical unit. Okay, it is the average distance between the Earth and Sun. नेक्स्ट लाइट ईयर. ठीक है, लाइट ईयर हमें पता होता है. ठीक है, एक जो लाइट होती है एक साल में कितना ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर. ओके, सो विल सी अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल इन अ वैक्यूम in 1 Julian year. Okay, so it is the unit of length used to express astronomical distance. 1 light year is equal to 3 into 10 to the power minus 8, 3 into 10 to the power 8 into
ऑब्वियसली स्पीड की लाइट की जो स्पीड होती है इतनी होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है। अब इस स्पीड से एक साल में कितना वो ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, वो डिस्टेंस बोलता है लाइट ईयर। ओके, सो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये एक साल में 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। ओके, अब इससे आप पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टाइम आएगा, जो डिस्टेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। सो इट इज़ नथिंग बट 9.461 × 10⁻15 मीटर, दिस इज नथिंग बट इज द लाइट ईयर। इतना डिस्टेंस जो हमारा लाइट है वो एक साल में ट्रेवल करता है। जूलियन ईयर एंड एस्ट्रोनॉमी और जूलियन ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम defined exactly 365.25 days of 86400 SI सेकेंड ईच, ठीक है। मतलब ये पूरे को हमें यूज़ करना है, इसमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद लाइट की जो स्पीड है उससे मल्टीप्लाई करना। मैं आपको एक 1 ईयर बोला था, वो लमसम बोला था, बट अब जैसे आपको पता ना कि जैसे हमारे लीप ईयर भी होता है उसमें 366 आ जाता है, फिर उसमें क्या बोलोगे, तो उसी तरीके से ये एक एवरेजिंग करके इसने जूलियन को इतना बोल दिया है, बट हम लोग एक्चुअली 365 या 366 ही मानते हैं। ओके, सो बट फॉर कैलकुलेटिंग दिस वी हैव टू एक्चुअली कंसिडर दिस वन। ओके, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यू कैन से अप्रॉक्स वैल्यू विच इज नथिंग बट दिस। फाइन, parsec. What is parsec? A parsec is an astronomical term used to measure large distance to astronomical objects outside the solar system. Okay, a parsec is defined as the distance at which one astronomical unit subtends an angle of 1 arc second, which correspond to this 64800 by pi astronomical unit. Okay, so this is the definition. 1 parsec is equal to 3.0857 into 10⁻17 मीटर, ठीक है, ये लाइट ईयर से ज़्यादा होता है। ओके, यू कैन सी हियर, ओके, सो 1 parsec is equal to 3.0857 into 10⁻16 मीटर। देखिए पार्सेक जब यूज़ करते हैं तो वो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होता है। ओके, सो 1 parsec इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, जो लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स होता है, दैट इज समथिंग बट इज पार्सेक। ओके, सो यू कैन रिमेंबर लाइट ईयर एंड पार्सेक। इसको आप याद रखिए कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि दिस डेफिनेशन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर एज वेल एज दिस वैल्यू, ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो सी दिस इज द एंड ऑफ द कैसे द थियरी पार्ट ऑफ measurement and units. I try to cover as much as units are possible. So इसके beyond नहीं होता, मोस्ट ऑफ चीज़ें होती हैं, अगर कुछ नया बनता भी है तो इसी के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, सो यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ऑल्सो नेक्स्ट क्लास आई विल कम अप विद द numericals, I mean obviously not numericals, you can say the previous year questions. It will be MCQs which already came in different exams. So it will be compilation of 5-6 PSCs and UPSC exams. So at one place you will find all the questions. Okay, so no need to mug up the other things for searching the questions. You will get everything in this playlist itself. Okay, so thank you for watching. Bye bye.